Center. Zafar Saresh, yes. First I thought of those high chairs, I thought, but we're all young, Mahesh bhai, we can't sit. At least they have some lights here. Earlier when we came, it was like a comic thing. Um, an avid Modi supporter since 2003. 2002 riots in Ahmedabad, his business suffered losses, but he's made a terrific comeback. He's bounced back. Belongs to a family that has spent about 250 years in Ahmedabad and generously giving his zakat, to the poor. Through all his difficulties, he's come through flying and smelling like a rose. And he's chief executive and MD of Ahmedabad-based Parsoli Corporation, top BMW dealership and Muslim investment company, and also new chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Let's very, very warmly welcome Dr. Saraswati. So these are both good Jews, huh? So we are all three good Jews so far. But it was very interesting, Manshwar, to learn that your mom was really beautiful combination of cultures and upbringing. Poonam Mahajan, they told me yesterday, I said, my God, so young and so pretty and so dynamic and so powerful. Yeah, hardly 35. Hailing from Mumbai, after her father's death in 2006, she joined BJP as a noble member. But she had that passion, no? To fulfill her father's unfinished dream. 2010 became National Vice President of BJP Yuva Morcha. She's President of Tapasvi Charitable Trust, teaching 1,000 underprivileged kids here. President of Pramod Mahajan Foundation, facilitating CSR work for corporates and putting them in touch with the NGOs. She's an animal activist. She's into youth issues and women-child development. Poonam Mahajan. And a mother, give her a big hand. She's got hardly a year-old kid. So I don't know how you, Poonam, you manage with everything. I don't know, we have 20 minutes. Amitabh, is Sudeep Bhai coming? Where is Sudeep Bhai? Oh my God. Sorry, sir. Give me that thing. I will just introduce Sudeep. Sudeep Tangarkar is one of the most upcoming. But I know it. Babu, I have it. I didn't see it. Okay. Okay. The highest selling romantic writer of India. My God. Let's have a look at you guys. So, and he got this award, Youth Achievers Award 2013, for his novel, It Started With a Friend Request, and there are 3 more novels. His novels are sold in lakhs, translated in regional languages, and he's only 27 years old. Wow. Among these busy schedule. I don't have a mother. Mike, please. Mike. Okay. Well, I lost my mother in the year 1998, but whatever I am, I've been shaped by my mother, and I owe my entire raison d'être reason to be to her, and it was her fierce resolve to see me there up, which kind of made me go on relentlessly. And as I was telling on those channels, they are most significant memory that you have of your mother. I was very moved by Salim Saab's memory of his mother. I have a rather painful one, but actually which is a painful month, but then turned into the sweetest memory. My mother was, I was barely 15 and I had come back from school and I was desperate to go down and play cricket. And my father, who was a filmmaker of some repute, had fallen into bad times, and we were having troubles to keep the wolf away from the door. And my sisters, who was slightly older than me, started working. And I started eating, and my mother looked at me with great anguish, and slowly I saw her eyes fill up with tears, and I was wondering what's got into her, why she's
why is the sight of me eating making her cry? So I said, what happened, Ma? And she said in Hindi, कि बेटा तू मुझे खाता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है. So I was wondering what she meant. She said कि तेरे पिताजी का हाथ तंग है और तेरी बहनें काम करती है और तू यहाँ पर खाना खा रहा है. That hurt me like hell, scorched me, my entire being. But only someone who loves you so much can give you such a whack. Yes. Only who loves somebody so much can take a whack like that. And that was the springboard which launched me. And ever since I have been at the helm of the affairs, taking charge of the entire flock of my home. Fantastic. Can you please pass the mic to Zafar Bhai? Zafar Bhai, we would like you to know. Tell us how do you make your mother smile? I think your mom is alive, so Namdebash. I have taken certain things, and that's what I told Amitabh. Amitabh asked me why Kalam Sahab was so passionate about mother. His mother. In Quran, there are certain things. There's a lot of description about how you deal with your parents. And there is more description about the mother. How you, for example, जो हमारे यहाँ गुनाह और सवाब है, मतलब ये नेकी है, पुण्य मिलेगा और ये गुनाह कर रहे हो. तो आता है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ ये है कि भाई मरने के बाद आदमी को मिलेगा, कि भाई मरने के बाद आपको मिलेगा गुनाह. तो कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आदमी मर नहीं सकता जब तक कि उसको भुगते नहीं दुनिया में. और उसमें एक गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी. यानी माँ बाप की नाफरमानी करना मतलब उनको दुख पहुंचाना. वो गुनाह ऐसा है कि जब तक कि वो उसको भुगत नहीं ले मौत नहीं आएगी. एक जगह पे कुरान में ये है कि माँ बाप के सामने उफ तक मत कहो. अगर माँ ने कुछ कहा या बाप ने कहा, हमारा होता है ना आर्ग्यूमेंट करता है, तो कुरान कहता है कि उफ तक मत कहो. यानी माँ ने अगर कुछ भी कहा तो उफ ने उफ भी मत कहो. एक जगह कुरान में यह है कि बेशक गधे की आवाज है उनकी जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करते हैं. गधे की आवाज. तो ये सारी चीजें जो है, और तो मैं ये इस पर पूरा अमल करता हूँ. मैं अगर मेरी माँ है, आज मेरी भी आई एम 50+ और मेरी मदर है, लेकिन मैंने एक तय किया है कि अगर मेरी मदर ने कुछ भी बोल दिया तो, और ज्यादा प्रॉब्लम जब होता है कि जब माँ और बीवी होती है हमेशा ये देखा गया है जिंदगी में. और वो बैलेंसिंग जो है, सेंस ऑफ प्रपोर्शन, वो हम लोग खो देते हैं हमेशा. तो मैंने उसका एहसास हमेशा अपनी जिंदगी में रखा है. जिससे मेरी बीवी कई मरतबा नाराज भी हुई है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं. तो माँ का जो दर्जा है, मतलब इस पर तो आप बोलते रहो खत्म नहीं हो सकता. और कई मरतबा हाँ ये है कि कभी जिंदगी में देखते हैं कि वो ये आदमी ने ऐसी तरक्की कैसे कर ली है ना. ये होता है ना कि ना ये इतना पढ़ा लिखा है, ना इतना अक्लमंद था, तो ये क्या हो गया है. तो अगर आप डीप अगर पीछे जाओ तो पता चलेगा कि उसने अपने माँ बाप को खुश किया. यानी माँ बाप को खुश करना ऐसी चीज है कि वो दुनिया में दे के जाती है, और इसी तरह उनको नाराज करना. और हम लोग बद्दुआ कहते हैं कि भाई बद्दुआ, तो माँ बाप के लिए बद्दुआ नहीं है, बस उनका दिल दुखना. तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँ. अब तो मेरी मदर ही है, फादर नहीं है. तो ये चीज़ों का मैं पूरा ख्याल करता हूँ कि भाई माँ जो है वो हमेशा वो खुश ही रहे. इसलिए कि, और एक और चीज़ है, लोग हमारे यहाँ भाई हज और उम्रे में बड़े जाते हैं, हज में जाते हैं. और आजकल तो आपके बम्बई में तो बड़ी फैशन है, यानी जिसको देखो उम्रे में जाता है. उम्रा है ना छोटा हज, और अब तो बम्बई में वीकेंड उम्रा भी शुरू हो गया है कि वीकेंड उम्रा, यानी उस पर बड़ी दौड़ लगती है. यानी ये लोग इस पर बड़ा करते हैं, साहब मैंने 30 हज किए, कोई कहता है मैंने 35 हज किए. साहब हम तो साल में एक हज और एक उम्रा है ना, इस पर बड़ी
गिनतियाँ होती हैं। तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, हदीस में ये आता है कि माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देख लेना एक हज और उम्रे का सवाब। आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, रोज आपको मिल जाएगा। बस ये बात। बहुत बढ़िया। पूनम जी प्लीज। I feel like a god today because I am a mother. You are a So mother and you have a mother also. Please Yes, share yes. some So, मुझे memories. ऐसा लग रहा है मैं खुद ही भगवान को आज घर जाके थोड़ा प्रकट हो जाऊं, बच्चों के थोड़ा अच्छे से आशीर्वाद दूं। सुबह ही मैं टीचर से बहुत कुछ सुन के आई हूँ मेरी बेटी के बारे में। 2.5 साल की है, 11 साल का कल जाऊंगी स्कूल, तो हर वक्त बुलाया जाता है। और बहुत अच्छी बातें महेश जी ने कही, जफर भाई ने कही, और हर किसी विषयों पे, अपनी विचारों पे, अपने धर्म विचारों पे, पुराणों पे कहा गया कि कहाँ क्या क्या सिखाया जाता है। इंसान कोई भी धर्म पुराण आगे ले ले, मातृभक्ति, माँ की ताकत, माँ की शक्ति, ये हर चीज़ में सिखाई गई है। बहुत अच्छे से कहा कि माँ को सुख देना चाहिए, यही हमारा हज है, यही हमारा सब कुछ है। बहुत अच्छा काम है। तो मुझे किसी ने पूछा कि आप एवरीडे हाउ डू यू मेक योर मदर स्माइल, मैंने कहती हूँ मैं उसको दुख नहीं पहुंचा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मुझे पता नहीं उसको हंसाऊं कैसे, लेकिन चलो एवरीडे आई एम नॉट मेकिंग हर फ्राउन। इट डज हैपन इन बिटवीन व्हेन शी क्वेश्चंस मी एज अ मदर दैट यू आर नॉट हैंडलिंग योर किड्स वेल। और मुझे हर वक्त जब तो मैं आप बहुत उनको सारी अपने शैतानी बच्चे को सौंप नहीं देते। सौंप दे चुकी हूँ, इसलिए तो काम कर रही हूँ मैं। और इतनी शैतानी करके भी मेरी माँ जब कहा करती थी मुझे कि तुम जब माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। मुझे बहुत चीजी सा फिल्मी डायलॉग लगता था कि हर वक्त ये क्या कहती है, माँ बनोगी माँ बनोगी। तो अभी पता चला माँ बन गई हूँ मैं। बहुत दिक्कत की बात है। मुझे अमिताभ जी ने पूछा, मैंने हर रात को सोचती हूँ कल सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शक्ति आ जाती है स्त्री में। और एक इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, अ वुमन कैन हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। I mean, she can multitask and do a lot of things that I don't know a man can do or not, but it's biologically proven and every man supports that. अभी नवरात्रि के दिन चालू हैं, तो मैं रोज सुबह, पहले मैं खुद कुछ करती नहीं थी, ना कभी भगवान को पूजा, ना कुछ, ना मेरे पिताजी ने कहा, ना मेरी माँ ने कहा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, आज ये पाठ करूंगी, थोड़ा आज देवी का पाठ करूँ तो बेटे के लिए अच्छा होगा, कल देवी का पाठ करूँ तो बेटी के लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वो अपने आप में निकल जाता है, क्योंकि हर कोई स्त्री की शक्ति ही वही है। हर धर्म में यही सिखाया गया कि मातृशक्ति, स्त्री एक शक्ति है। मैं क्यों शिव भगवान को थोड़ा मानती हूँ कि शिव और शक्ति इट्स इक्वल गिविंग टू हिज वाइफ। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और यही हमें देखना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपने कहा कि पुरुष की भी उतनी ताकत होती है, मैन इज ऑल्सो अ फादर, इज दैट एग्जैक्टली 50% इम्पोर्टेंट। क्योंकि जफर भाई, मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ, आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं। हमारे घर में भी वही दिक्कत कभी कभी होती है। नहीं, क्या होता है पूनम जी, आफ्टर किड्स आर born, husbands are threatened because earlier they were getting all the attention. Father एक और चीज मैं कहूँ also. कि एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे एक दोस्त थे इंग्लैंड में, वो हमेशा शिकायत करते थे अपनी मदर इन लॉ की कि यार मेरी सास ये करती है। मदर इन लॉ की बड़ी शिकायत करते थे। मैंने कहा यार उसको माँ समझना शुरू कर दो। और हमारा मेल शॉविनिज्म में क्या होता है कि अपनी बीवी से आदमी ये चाहता है कि वो उसकी माँ को माँ समझे, Absolutely. लेकिन बीवी की माँ को हम सास ही समझते हैं। तो जिस दिन हम अपनी सास को भी माँ समझने लगेंगे तो सारा मसला खत्म हो जाएगा। इतना लंबा पैनल डिस्कशन नहीं, लेकिन जैसे हज, अपने पेरेंट्स की आंखों में आप खुशी देखेंगे, दैट इज हज फॉर यू। That's it. यही हमारे शिव पुराण में सिखाया गया है कि गणेश जी को, और जब कहा गया था कि तुम पृथ्वी की प्रदक्षिणा करो, तो उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कही और कहा कि यही मेरा पूरा दुनिया है, यही मेरा रास्ता, और माता पिता साथ में। तो यही होता है, धर्म हो कुछ भी हो, स्त्री शक्ति हर किसी पुराणों में, धर्मों में यही सिखाई गई है, और वो मानवता वही है। और मुझे लगता है हर किसी के पास वही, कहीं ना कहीं वही कहानियां हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट वांट टू मेक माय मदर स्माइल एवरी डे बिकॉज इट्स क्वाइट टफ, बट एटलीस्ट आई डोंट वांट हर टू बी फ्राउनिंग एंड ट्रबल्ड बाय मी। दैट्स द ओनली थिंग आई लुक इनटू। Okay. Please, Sudeep bhai, share something about your mom. Talking about making mother happy, I think the best thing I can do for making her happy is by giving my time to her. Because we probably, especially my generation, we live in a generation where probably we have all the luxuries, we have all the money, but then we have very little time to our parents, for our parents and our family. And we probably forget that as we are also growing older, even they are growing older, and we should take care of them.
तो जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं टाइम देता हूँ एंड दैट इज़ बिकॉज शी हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट. I want you to tell us how do you do that. Give us example of a few activities you do with that. Yes, that's what. Now I'm traveling to different cities. तो जितने cities में हो सके, I'm taking her also along with me for the launches of my book. And she's traveling with me also. Now she's coming to Indore. Also मैं इंदौर जा रहा हूँ तो. And that is the one because she supported me a lot. I did my engineering basically, and then I did my management studies. But then when I was in engineering, तो उस टाइम पे I had a couple of year drops in engineering, so I was not a very bright student at that time. तो जैसे ही मतलब 2 साल का drop था, and what happens generally is when you face such kind of academic failures, your relatives start caring for you so much, and suddenly they emerge out of nowhere and they have a lot of care for you. Every corner, like your neighbors, your relatives, everywhere. हाँ, सारे बहुत care फिक्र होने लगती है उनको. तो वैसा ही कुछ था. But then at that time my parents supported me a lot. They told me that don't worry about everything, just go ahead and do whatever you want to. And वो जो एक moral support मेरे को मिला था घर पे, otherwise it was very difficult for me to face my parents at that time. But then my mom was behind me कि जो भी कर रहा है ठीक है, अगर 1 साल गया 2 साल गया, but then still it's fine, you can cover it up later. And जितनी वो सारी मतलब उस टाइम पे सिचुएशन थी, बिकॉज उसी टाइम पे मेरे 1-2 और दोस्तों को भी ड्रॉप लगे थे और मैंने देखा था उनके घर पे क्या सिचुएशन होती है, बिकॉज everyone wants their child to be the best in academics या कहीं पे भी, सबको 95% चाहिए, 98% चाहिए. But then that pressure can actually demotivate a child. तो वो नहीं होना चाहिए. जो उसको सही लगे वही उसको करने देना चाहिए. And because why I'm saying this is, yes, I did complete my engineering because of the moral support that they gave me. उसके बाद मैंने management studies की, and then I took writing full time. So you see all the 3 things are so contradictory to each other. कि इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट का राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है. But then still my parents were like, okay fine, it's your passion to write and go ahead and follow writing. Because it is very difficult to convince an Indian parent, it's very difficult, and especially when you are taking a creative field as a full time, and especially when I belong to Maharashtrian family, so ma'am might be, yeah, so she might be aware that what happens in a Maharashtrian family is, even if you are earning a 10,000 rupee per month, they are satisfied. लेकिन 6 महीने में अगर 10-15 लाख आए तो वो नहीं है. वो they need a secured income. कि हाँ महीने में 10,000 आए ठीक है, secured है. So it was very difficult for me to actually convince my parents at that time that I am taking writing full time, and especially in India where probably it is very difficult to survive out of writing. But then touch wood, all my books are doing well, and I believe it's only because of the support. Chetan Bhagat and Yeah. Tripathi. Yes, so that's what, that the new book is Both already management. released. Everyone, yeah, that's what it is important to follow your passion, and at that time तुम्हारे घर पे जो situation है वो अच्छी होनी जरूरी है. तो And a mother does that. Mahesh bhai, I would like concluding words from you because Well, I you said feel something that negative on it. I was thinking that we should not reduce a mother to an image that we have sourced from the greeting cards that come on Mother's Day from the West. Yes. For me, the mother is the woman who comes to my house from the slums. She's the woman who carries the loads on her head when we travel from Mumbai to Pune or when we travel any part on the highways. A mother is a woman who has been dealt a hand by the cards by life, and she chooses to play it wherever she is. And each mother is unique. So there's nothing like a generic mother. And whatever she does is she finds it in her own unique way. You may have a general idea of a mother, but when a mother sets out to play the role of a motherhood, there is no compass, there is no map. She has to create her own route by walking, and that is where we must acknowledge that there is no general image of a mother, unique mothers. As many people are there in this planet, there are so many mothers, and those each one has got a unique narrative. So you can't reduce such a huge, trying to reduce the universe of the mother to just one postcard image would be tyranny, and we would wrong the mother. That's it. So I would think we need to do both quality and quantity. Time, if that's what you're thinking about, or just one card. And I want to end it with beautiful
words of Khalil Gibran about children. Your children are not your children. They are the children of life's longing for itself. They came through you, not from you or for you. Because their sight, their eyes are into the future, where we can't even see. So our children are our greatest gifts of God, just as mothers are gifts of God to children. Let us all make a beautiful home and beautiful country. Thank you very much. Thank you. Can I request Sid from Jet King and Yogendra Singh Rathod, a top willpower and memory technique coach, to come on the stage, please? Can we have all the kids, all the children, please, up on the stage? All the बच्चा पार्टी आ जाओ. ए दादा कस्टल भाई पे कप्ता दिले उनके बच्चे गए हैं All right. She's actually the director of this. Kiran ma'am. Parate Dhinu from KK Shrishti, Anand Niketan, Maninagar. Shofia Bhootwala, Anand Niketan, Maninagar. Rija Rajan, Anand Niketan, Maninagar. Nirvi Faldu, Anand Niketan, Maninagar. Suraj Shah, Anand Niketan, Maninagar. Zara Mehta, Anand Niketan, Maninagar. We have Vaishali Saloni Bachwat, Somla Link Institute of Business, Dhyana Dave, Shrushti Patel from HB Kapadia, Dhwaj Brahmbhatt, Dhruvi Brahmbhatt, Shah Yashasvi, Prashant Panswaria, Patel Jay, Monish Pillai,
नुपुर पटेल, नुपुर गोविट, नियति बजाज, विवा कोराडिया। नो क्वेश्चंस। मैं इसी विषय बोलूंगा बस। I will only talk about this. Ready? मेरी जान मैं नहीं अभी इस पे बोल रहा हूँ। प्लीज माफ करो यार। ये जिस इशू पे आए हैं उस पर बात कर ले दो ना यार। सारी दुनिया की बात कर ले दो तुम लोग। Ready? Ready? अरे आप हंसिए मत। My mother has been the guiding light of my life. And whatever I am, I owe it to my mother. But I can never forget that memory of when I was 15, when she cried when I came back from school and I began to eat and I was too eager to run away and play cricket. Our household was going through a bad economic time and my sister started working. And she said, the sight of you eating makes me very uncomfortable. That your sisters are working and you're not working. And that was a rap on my face, which kind of woke me up to the truths of life. And I realized only a mother who loves you so much can tell you such painful truths. And only a son who loves the mother so much can listen to that. And that became a springboard to my life, for my life, and I became a successful man because of that very uncomfortable moment in my life. Okay, as we talk about these young writers today, they have written letters to their mother. A lot of writers have, returned their award, and they're protesting against intolerance. How do you see this? Well, all art and all creative work flows out of the heart of an individual who is uncomfortable with status quo. And no wonder establishments have always tried to muzzle the voice of free thought, because free thought subverts power. It is understandable that there is a sizable lot which feels that they have reasons to express their protest through this gesture of returning the award. And I completely endorse and support their view. However, there is an alternate view, which is also a view which you must listen to, that perhaps by remaining within the fold and not indulging in this gesture of merely returning the attack of the award, they may have been able to drive home their point of their discomfort with the present regime more effectively. But as I said to somebody, it depends on the politics that you have. If you believe in one kind of politics, you will find it very, very applaudable and very brave. And if you believe in the other, you will find it. You will be cynical and say that it was orchestrated and it deserves to be ridiculed. सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी की बात नहीं करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा। I will talk about only this. मैं इसी पर बात करूंगा, नहीं करूंगा मैं। My right to remain silent can be safeguarded by me or not. मैं इस मंच पे आया हूँ, इसी पक्ष पे बात करूंगा बस।